Hello beta, in this video I will explain to you electrophilic addition reaction and nucleophilic addition reaction. What do you mean by electrophilic? Means positive species. What do you mean by nucleophilic addition or nucleophilic? It means negative species. So सबसे पहले तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि if double bond is situated between the same type of atom, then electrophilic addition reaction is given by the compound. And if double bond is situated between the two different atoms, then this type of compound gives nucleophilic addition reaction. मतलब बेटा अगर डबल बॉन्ड सेम एटम के बीच में है, मीन्स सिमिलर एटम के बीच में है, then addition is given but electrophilic addition is given by the compound. और अगर बेटा डबल बॉन्ड कार्बन एंड ऑक्सीजन मतलब बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, देन एडिशन इज गिवन बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन गिवन बाय द कंपाउंड. अब बात क्या आती है कि कई बच्चों को तो यही पता नहीं लगता है कि विच टाइप ऑफ कंपाउंड गिव्स एडिशन रिएक्शन. तो बेटा एडिशन रिएक्शन के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है कि इफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड और इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कंपाउंड, देन एडिशन रिएक्शन इज गिवन बाय द कंपाउंड. मतलब अगर किसी भी कंपाउंड में बेटा डबल बॉन्ड हो या फिर वो अनसैचुरेटेड हो, डबल बॉन्ड किस में हो सकता है बेटा? एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन. जरूर नहीं कि केवल कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो. डबल बॉन्ड में भी प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड में भी प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो जिसमें भी डबल बॉन्ड होगा बेटा, देन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इजीली गिव्स टू द एडिशन रिएक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ डबल बॉन्ड इज सिचुएटेड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, देन व्हाट विल हैपन? इसको अपन क्लियर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल HCN इज डिवाइडेड इनटू बेटा H प्लस Cn माइनस. पाई इलेक्ट्रॉन में भी ट्रांसफर एट द बोथ कार्बन. पाई इलेक्ट्रॉन बेटा दोनों में से किसी भी कार्बन पे ट्रांसफर हो सकता है. सो HCN डिवाइडेड इनटू H प्लस एंड Cn माइनस. H प्लस और Cn माइनस, विच वन कंबाइन एट द अनसैचुरेटेड कंपाउंड? This one is decided according to the stability of H and Cn. बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूं कि H and Cn में से कौन ज्यादा स्टेबल है, so Cn is more stable than H. So H attract toward the pi electron and H is a positive, so H is a electrophilic group or species. So first of all H combine at the unsaturated compound at this carbon or this carbon, it may be possible. So suppose if hydrogen combine at this carbon, then this pi electron transfer toward this carbon and hydrogen combine at this carbon and positive charge is developed at this carbon. Later on Cn attract toward this positive carbon and form this compound. So in the above equation, first of all H move toward the pi electron. Later on Cn is also combined at the positive carbon. So first of all beta कौन गया? H plus. Therefore it's known as a electrophilic addition reaction. So if double bond is situated between the same carbon, yeah, between the same or similar atom, then compound gives always electrophilic addition reaction. And we take another example in which double bond is situated between the two different atoms, between carbon and oxygen. So we know very well that pi electron is already situated or shifted toward the oxygen because oxygen is more electronegative than carbon. Oxygen की electronegativity बेटा कार्बन से ज्यादा है, तो therefore pi electron is already shifted toward the oxygen and partial negative and partial positive is developed at the carbon. So ये चीज तो बेटा पहले से ही decided है कि pi electron is always move toward the more electronegative element. So HCN is always divided into H plus and Cn minus. H is unstable, but there is different condition.
because electron deficiency is already situated at the carbon. So H is not transferred toward the oxygen. In this case, carbon have positive charge, therefore Cn move toward the carbon. And first of all, Cn combine at the carbon, and in a second step, H combine with oxygen. So first of all, Cn combine with carbon, and later on hydrogen combine with oxygen. So if double bond is situated between carbon and oxygen, then addition is given by the compound. But this one is known as a nucleophilic addition reaction. तो बेटा आपने को ये चीज बस ध्यान रखनी है कि if double bond is situated between the similar atom, then electrophilic addition is given by the compound. If double bond is situated between the two different type of atom, then nucleophilic addition reaction is represented by the compound. Okay beta, so this one is a type of addition reaction.